the next property, which is display property. You want to change the display of different elements. You want to change the display settings. So display setting means how the elements are displayed by default. So that is, some display settings are associated with that particular element. For example, the element, say paragraph, P element. So what about P element? Suppose you are using P element. So for that, the display setting is the block level. So this is default setting. Block display means the paragraph will be displayed in a separate block, separate line, you can say. So before paragraph and after paragraph, if suppose some other elements are there, so that will be displayed separately. That will not be displayed along with the paragraph in the same line. So this is the meaning of block level. If paragraph is block, so in the line of the paragraph, no other element are displayed. So this is the meaning of block level. So some elements are by default block level and some elements are by default inline. For example, the anchor element, link A tag. Okay, so when you use more than one A tag, so all the links, suppose you are creating 3 links, so 3 links can be created in the same line. When you created a link, in the same line you can add more elements, okay, more tag. So same with the link you can add image, okay. So image के बाजू में भी आप link display कर सकते हैं, because the image and link both are inline display. So this is the meaning of block and inline. तो आपको अगर किसी पैराग्राफ का डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करना है, ब्लॉक से इनलाइन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं. और अनदर एग्जांपल, इफ यू वांट टू चेंज द डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ एंकर एलिमेंट, लिंक है सपोज, उसका आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करना है. बाय डिफॉल्ट द एंकर एलिमेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज इनलाइन, लेकिन आपको इनलाइन से ब्लॉक लेवल करना है. So that is possible. So for that purpose, display property is used. Now here there are 3 values you can assign to display property. Okay, property का name क्या है? Display. Display is the name of property, and there are 3 values: none, block, and inline. So let us discuss all these values one by one. So suppose we have 3 links, and here for that I am not using any display property. So what will be the output? Let us see. I will run this program. All the 3 links are displayed in the same line because link element having the inline property. If suppose you want to change from inline to block level, so for that purpose here in CSS, in style tag, you can change the property of anchor tag. So here this selector I will use. The selector is A, because I want to change the style for element A. So here property which I use is display, and I want to change from inline to block. So here I will write block. This particular element, the display will be block level. So let us refresh. Okay, so now the property has been changed. So the display property of link is now block level. So that's why the link is displayed in new line. If suppose there are some other elements are also there, for example, after this link, suppose here I am using this is a line. This is a line. Okay. So this is a line. So here the text will also display in next line. Okay, because the property of link 1, link 2 is block level. So this is the way you can change their display setting. Now the next example, we will take paragraph. I am creating a paragraph. This is a paragraph. There is one link. एक पैराग्राफ है और एक लिंक है, and here I am not using any property. I am not using any CSS. So by default what happens? The paragraph will be displayed in separate line, block level, and the link will be displayed at bottom. So here you can see the output. पैराग्राफ एक सेपरेट ब्लॉक में डिस्प्ले हो रहा है और लिंक उसके नीचे डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज इन द सेम लाइन द लिंक कैन नॉट बी डिस्प्ले. नाउ सपोज यू वांट टू चेंज देयर डिस्प्ले प्रॉपर्टी. विच डिस्प्ले प्रॉपर्टी? पैराग्राफ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है. सो हियर इनसाइड स्टाइल यू विल राइट CSS. द CSS, नाउ हियर यू आर यूजिंग द selector is P because you want to select the paragraph element, and here
the paragraph display property you want to change. So the paragraph display property is default property is block, but you are changing their display property from block to inline. So here what happens, you can see link is displayed along with the paragraph. तो समटाइम इट रिक्वायर्स, अगर आपको वेब पेज में ऐसा कुछ चाहिए कि पैराग्राफ के साथ में ही लिंक आपको डिस्प्ले करना है, सो फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. सपोज देयर आर 3 paragraphs. So here I will put 1 2 3 so that समझ में आएगा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. So for all this paragraph the display property is inline. तीनों पैराग्राफ एक के बाद एक डिस्प्ले होंगे. There is no difference in all this in these 3 paragraph. So here you can see दोनों पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो गया. So here the paragraph there is no separation, कोई भी पैराग्राफ सेपरेट नहीं है because properties here change. Now let us discuss about value none. So none value is used to remove that particular element. Okay, उस एलिमेंट को डिस्प्ले नहीं करना है आपको. Suppose you don't want to display that particular element, so in that case none is used. So let us see. Now let us take another example. Here I will change HTML also. So here instead of paragraph I am taking div, because div is also block level element, and here I will write this is text 1. This is text 1. I will close div. So suppose there are 3 divs. 3 divs are there. Okay, so the output is, since the div tag is block level element, okay, so each div will be displayed separately, and here we are not using CSS for div. वो पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ इसमें नहीं है. So div will be displayed in the default setting. So by default each div are displayed in different block. So now let us change the property of div. Use the display property for div. Now here I am using display none, but here if I use display none for div, so no div will be displayed, कुछ भी div display नहीं होगा. But suppose you want to display, you want to remove this particular div, second वाला div मुझे remove करना है. So how it is possible? So for that purpose what you can do, here you can take one attribute. The name of attribute is class. Class attribute you can use. Suppose मैंने class यहाँ पे लिया है, तीनों में class लिया है, Control C, यहाँ भी लिया मैंने. So this class attribute I am using. So the class name I am also giving. C1 is the class name. Here the class name is C2. Here the class name is C3. So I have assigned the class attribute with the div. So class attribute can be assigned to any element. आप class attribute किसी को भी assign कर सकते हैं, link में कर सकते हैं, paragraph में कर सकते हैं, heading में कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, तो separately you can change the property. C1 अगर class किसी का C1 है तो C1 को मैं कुछ अलग property दे सकता हूँ, C2 को मैं कुछ अलग property दे सकता हूँ, इसको मैं कुछ अलग property दे सकता हूँ. So here if suppose I want to select the second div where class is C2, so here I will write div dot C2. So which div I am selecting? Which div I am selecting? The second div I am selecting. So specifying the class name, you can select that particular element. So here which element I am selecting? I am selecting element div, second div. Second div display will be none. So let us see the result. So here you can see the first div and third is coming, but second is not coming. If suppose if you are using div dot C1, so which div will not be displayed? First div will not be displayed.
second and third will be displayed. Now there is one more property. For example, अब आपको इसको रिमूव नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको सेकेंड div को ये जो लिखा हुआ दिस इज अ टेक्स्ट 2 इसको रिमूव नहीं करना है, इसको हाइड करना है. सो देयर इज अनदर प्रॉपर्टी. सो द प्रॉपर्टी नेम इज विजिबिलिटी. इसका विजिबिलिटी आप क्या करेंगे, हिडन करेंगे. इसकी वैल्यू हिडन होती है. तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज देयर विजिबिलिटी. अभी बाय डिफॉल्ट वो विजिबल है लेकिन आपको हिडन करना है तो आप उसकी वैल्यू हिडन कर दो. तो कौन सा div हिडन हो जाएगा, C2. सो द रिजल्ट इज लाइक दिस. इसका जगह अब वहां पे वैसी की वैसी है सेकंड का, वो सिर्फ हाइड हुआ है, रिमूव नहीं हुआ है. डिस्प्ले प्रॉपर्टीज फिनिश. द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस पोजीशन प्रॉपर्टीज.